it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Sahelanthropus. Find out what his plans are. Skullface's plans are on the verge of fruition. We need to stop him while we still can. The map has been updated. Be careful down there, boss. Soviet soldiers in that area are all dead. Apparently XOF unleashed the Russian parasite strain. To isolate the facility, they first spread reports of a chemical weapon leak. The infection won't spread into the surrounding regions. Still, to think they just exterminate the men who worked with them Please all this select a time. deployment point. Skullface must be making his final play. Eli snuck into the cargo on board the chopper. His idea of an escape attempt? Who can say? We'll think of how to deal with him later. Snake, do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Sahelanthropus. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you, not him. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it, that I've always been your ally. Boss, I'll be focused on coordinating backup here in Mother Base. The chain of command is still in place. If you have orders, give them through Miller as usual. Skullface is in OKB-0. Start by making contact with him. The facility itself is under the control of XOF, Cipher Strike Enemy Force. presence We have no hard detected. data on The their map force has been strength, updated. so your judgment in the field will be key. Boss, we're finally here. Find Skullface and take everything from him. What's going on, ladies and gentlemen? This is your Mr. Stranger. We have come back with another episode of Metal Gear Solid 5 Phantom's Pain. तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि स्कलफेस ने एक वायरस स्कलफेस जो इस गेम का मेन विलन है, उसने एक वायरस नहीं, उसे कोई बैक्टीरिया टाइप कुछ है जो उसने बनाया है, जिसकी वजह से बहुत ही लोग मर रहे हैं। और वही उसने अभी रशियन सोल्जर्स के ऊपर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सारे रशियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इतनी देर में। तो अब हम लोग सीधा स्कलफेस के मेन अड्डे पे हमला करने वाले हैं, जो इस दीवार के पीछे है, जिसका नाम OKB-0 है। इस जगह का नाम बहुत ही कड़ा पहरा है। बाकी जिस जगहों पे हम लोग घुस चुके हैं उनसे ये जगह बहुत ही अलग है। चारों तरफ लैंड माइन्स बिछाए गए हैं, स्नाइपर्स है कोने कोने में। अगर एक गलत चूक वहीं पे काम खेल ख़त्म कर सकता है। तो जो भी हो, संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही कड़ा पहरा है। ये बाकी किलों की तरह नहीं है। Analysis complete. ओके, और शायद यही आखिरी एपिसोड हो सकता है, या इसके बाद भी कोई आखिरी एपिसोड हो सकता है। मुझे कोई पक्की खबर नहीं है, पर आई थिंक यह आखिर हो सकता है। पर चलो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मेन करना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो स्कलफेस को पकड़ना है और उससे पता लगाना है कि वो असल में करने क्या वाला है। क्योंकि इसी बेस के कहीं ना किसी न किसी जगह पे वो सैहेलांथ्रोपस जो है, वो बड़ा सा मशीन, वो छुपा के रखा गया है।
और जो वायरस है वो किस लिए वो सारे जगहों पे ऐसे ही छोड़ रहा है, जिसकी वजह से इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके प्लान के बारे में किसी को कोई पक्की खबर नहीं है। तो इसके बारे में जानने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलो देखते हैं। ये बम लगा लिया है। अब चलो एंट्रेंस ढूंढते हैं, क्योंकि उस तरफ से तो हम नहीं जा सकते, घूम के ही जाना पड़ेगा। और हाँ, ये वही फोर्स है जिसने मुझे एपिसोड 1 पे हॉस्पिटल पे मारने के लिए भेजा गया था, XOF, जिसके बारे में मैंने पहले बोला था। ये वही स्ट्राइक यूनिट है जिसने हॉस्पिटल के सारे नर्स, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, ईच एंड एवरीवन, सभी को उन लोगों ने मार डाला था, सिर्फ मुझे मारने के लिए, मतलब सॉरी, स्नेक के लिए मारने के लिए। देखते हैं, इस तरफ से जाने का रास्ता तो होना चाहिए। ओके, we are good. Good work. 2 more gates to go. Still all quiet at the silo. No sign of Skullface or his Goliath. Surely they can't already have... No, never mind. Development project has ठीक been है, तो added. और 2 गेट्स, ऐसे ही गेट्स हमें क्रॉस करना है। उसके बाद स्कलफिश का मेन, स्कलफिश के बेस के एकदम बीच हम लोग पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमें स्कलफिश मिल जाएगा और उसके आदमी नहीं, उस जिसके लिए हम लोग मेन यहाँ पे आए हैं, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। चलो नाइस एंड इजी चलते हैं। The map has been updated. Caution, sandstorm approaching. पर फिर भी मानना पड़ेगा, ये बाकी मिशंस में से सबसे हेवीली, सबसे टफेस्ट अभी तक मुझे लगा नहीं है, पर अभी तो जस्ट शुरू कर किए, पर देखते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग मिशन है, समझ में आ रहा है। एक गेट क्रॉस करने में इतनी फट रही है मुझे तो और 2 क्रॉस करने हैं। ओके, वी आर क्लियर। ये सैंडस्टॉर्म बहुत बड़ा रोल क्रिएट कर लेता है जब भी ये आता है, क्योंकि इस बीच ही हम लोग छुप के बहुत दूर निकल सकते हैं, और ये रहता भी कुछ सेकंड तक है, तो इससे बहुत फ़ायदा ही होता है, मैं तो बोलूँगा। चलो ऊपर चलते हैं। Second gate. Only 1 gate left. From here on in, you're in the enemy's headquarters. Something's wrong. But it has to be here. ओके, तो अब हम लोग एनिमी के हेडक्वार्टर्स में एंटर कर रहे हैं, और एक गेट हमें क्रॉस करना है।
उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से अंदर हो जाएंगे बेस के। ओके पिछले किसी भी मिशंस पे मैंने ये कैमरास नहीं देखे थे, पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी हो, इस कैमरास को भी मैं शूट नहीं कर सकता। अगर शूट कर दूंगा शायद डिसेबल हो जाएंगे, पर अलार्म बजता रहेगा तो। और शिट, शिट 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 शिट, जल्दी से निकलना पड़ेगा। You don't see me. आजा, चल बता। The map has been updated. ओके, एक गया, तू भी आजा। चलो, 2 का तो काम हो गया। शिट, तो मैंने एकदम एंट्रेंस पे एक बॉम्ब लगाया था, अगर आपको पता है तो। उस बॉम्ब को मैंने अभी ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से वो लोग सोचे कि एंट्रेंस पे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अभी उस तरफ नज़र दे रहे हैं। पर डाइवर्ट हो गया है, मेन बात ये है। जो भी हो, उससे मेरी फ़ायदा ही होगा। अंदर घुसने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ओह शिट, चलो ठीक है, तू भी आ जा। Extraction arrived at Mother Base. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैप बिछा देता हूँ, जिससे काम बच जाएगा। और उस तरफ से स्क्वाड भी हमारे बहुत ही अच्छा कवर फायर दे रही है, जिससे अंदर घुसने में और भी ज़्यादा इजी हो गया है। क्योंकि वो ऊपर स्नाइपर राइफल लेके बैठी है, उसे तो कोई चिंता नहीं है, उसे कोई देख भी नहीं सकता। वो सबको ठोक सकती है आराम से। ओके, तो हम लोग अब 3rd गेट पे पहुंच चुके हैं। अब इसे ही पार करना है, जल्दी से पार करते हैं। ओके, नाइस एंड इजी। यहाँ पे बहुत सारे बंदे। ओ तो ठीक है, ये जगह क्लियर हो चुका है।
अब मुझे ऊपर जाना है, देखते हैं ऊपर जाके कहाँ पे जाना पड़ता है। Stop coming after you. His ride has arrived. Don't let Skullface get away. Stop him at the heliport. ओके, तो स्कलफेस अभी हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसे जल्दी से Can you see that? रोकना पड़ेगा। वो रहा। Skullface is right there. Make contact with him and make him talk. We have to stop him before his plan is set in motion. Sahelanthropus is somewhere inside there. First of all, make contact with Skullface. Don't kill him yet. We need him to talk first. ओके ओके, वी आर ऑन इट। तो हम पहुंच चुके हैं, उसे रोकना पड़ेगा जैसे भी हो। You too have known loss, and that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! If it comes to that, that's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. ओके, तो अभी हम लोग उसे मार नहीं सकते, उसके साथ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि उसके प्लान के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। With just one possible solution derived by Cipher, my will is different. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Fox's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. And then the Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cipher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. America is a country of liberty, a meeting of immigrants.
Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one. But he tried to forge a single consciousness for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. अभी वो मेनली पूरी जो कहानी है, जो ये पैरासाइट्स, जो वायरस मैं बोल रहा था, उसे वो वायरस नहीं है, मेनली वो पैरासाइट्स है, जिसकी वजह से ये सब झमेले हो रहे हैं। तो वही अब वो बताएगा कि क्यों उसने ये सब किया, मतलब उसके प्लान्स के बारे में और आगे के प्लान्स के बारे में। अब उसके साथ जाने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसके साथ हमें भी चलना पड़ेगा। अब मैं उसका बंदी हूँ, जो भी हो, लेट्स गो। To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's rule. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me. And not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, "It is no nation we inhabit, but a language." Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cipher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cipher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will
exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. To free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca. The world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together. In equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost paths. And the world will become one. This war is peace. जैसा कि स्कलफेस ने बताया कि वो जब छोटा था तब उसके गांव पे सोल्जर्स ने रेड किया था और वहाँ से उसको अगवा कर लिया था। उनके फैमिली मेम्बर्स से उसे दूर कर दिया गया था। उसके बाद वो आर्मी बेस कैंप पे रहता था, उनके हुए काम करता था। तो बेस कैंप बदलता गया, उसके मास्टर्स भी बदलते गए। वो जिसके अंडर पे रहता था वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो वो भी अलग अलग भाषा बोलने लगा, पहचानने लगा। इसके बाद उसे पता चला कि इंग्लिश जो है वही मेन लैंग्वेज है जो सारे लोगों को बांधे रखा है। उनको मुक्ति चाहिए, उन सभी लोगों को मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए उसने एक अलग ही तोड़ निकाला है, जो मैंने पहले बोला था कि पैरासाइट। जो भी बंदे, जो भी आदमी, औरत, जो भी हो, इंग्लिश वर्ड जानते हैं, बोलते हैं, उनको ही जाके पैरासाइट्स हमला करते हैं और उनको ही मार डालते हैं पूरी तरीके से। तो इसी वजह से वही लोग मर रहे हैं जिनको इंग्लिश ही आती है। तो यही स्कलफेस का मेन उद्देश्य है, मेन प्लान है, जिसके बाद इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया पे। और अभी वो हमें उसके सहलैंथ्रोपस जो है उसके पास हमें लेके जा रहा है। आप लोगों ने मेरा वो एपिसोड, सहलैंथ्रोपस वाला एपिसोड जहाँ पे उसे पहली बार दिखाया गया था, वो एपिसोड अगर दिखा है तो इस जगह को बैकग्राउंड पे ज़रूर पहचाने होंगे। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने रात पे एंट्री ली थी। जो भी हो, कट सीन्स और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो के आगे और पीछे के कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। We are here. Remember the Alamo. On station to provide cover. Get us a line of fire. Roger that.
We're not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! Wait! Who is doing this? Such a lust for revenge?